1,81,000 से अधिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक राष्ट्रीय राजधानी में करीब 90 गैर लाइसेंसी हथियार, 2,117 कारतूस जब्त किए गए। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत 82 प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं और 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत 25 मार्च तक बढ़ा दी है और वाड्रा से मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा था कि वाड्रा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की जरूरत है। ये मामला लंदन के ब्रायटन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। 16 फरवरी को अदालत ने आज तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। होली के अवसर पर 21 तारीख को दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। इसके बाद मेट्रो रेल सेवा सामान्य रूप से जारी रहेगी। मेट्रो फीडर बस सेवाएं दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेंगी। उसके बाद ये बसें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। राजधानी में होली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। प्राकृतिक रंगों के अलावा लोग पिचकारी और गुब्बारों के साथ साथ अन्य सामानों की भी खरीदारी कर रहे हैं। होली का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन कल मनाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप पार्टी के नेता विभिन्न समुदायों के बीच आपसी मतभेद पैदा करने का भी प्रयास कर रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भावना तथा आईपीसी भाईचारे और शांति को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार सीसीटीवी कैमरे लगवाने के नाम पर विधायकों के नेतृत्व में कॉलोनियों और मार्केटों का निरीक्षण करवा रही है और अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि वे कल आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाएंगे। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने मंत्रालय के सचिव से जेट एयरवेज द्वारा अपनी उड़ानें रद्द करने, अग्रिम बुकिंग, टिकट रद्द करने और रिफंड तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक बुलाने को कहा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय से तुरंत अनुपालन रिपोर्ट भी मंगवाएं। जीएसटी परिषद ने आज आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्तु और सेवा कर दर में एक नई परिवर्तन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत आवासीय परियोजना डेवलपर्स अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए इच्छा अनुसार बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के नई संशोधित कम दर का चुनाव कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर बने रह सकते हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 1 अप्रैल या इसके बाद शुरू की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर्स को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स इस वर्ष 31 मार्च के बाद या इससे पहले शुरू हुई अन्य मकान परियोजना के लिए जीएसटी विकल्पों की अन्य योजनाओं का भी चुनाव कर सकते हैं। राजधानी में शालीमार बाग स्थित दिल्ली पुलिस संचार मुख्यालय में आज मोबाइल नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की गई। इस सेवा की शुरुआत दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने की। ये नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस होगा ताकि आवश्यकता अनुसार राजधानी के सभी जिलों में सुरक्षा और यातायात संबंधी सूचना भेजी जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है। आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। थल सेना के सिपाही विजय कुमार और सीआरपीएफ के कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता अनुपम मिश्र।
असम राइफल्स के राइफलमैन जयप्रकाश ओरांव और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। श्री कोविंद ने 16 वर्षीय इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र प्रदान किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 2017 में अपने घर पे हुए आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। राष्ट्रपति ने असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 26 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को जम्मू कश्मीर में उनके नेतृत्व में हुए आतंकरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन आतंकवाद का इसके सभी स्वरूपों से निपटने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने पुलवामा, क्राइस्टचर्च और उटरेज की हाल की घटनाओं सहित पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में अपने आवास पर घाना के उपराष्ट्रपति महमूद बावूमियान, गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फुफाना और लेसोथो के उप प्रधानमंत्री मोएन मुलेलेकी के साथ बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। गुरुग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 80वीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि देश पुलवामा आतंकी हमले को भूला नहीं और न ही कभी भूलेगा। श्री डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। श्री डोभाल ने कहा कि संकट के समय जब भी बल भेजे जाने के बारे में बैठक और चर्चा होती है तो राज्य सरकारें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने की मांग करते हैं। इस बल को ऐसी लाख बनाने में वर्षों की मेहनत लगी है। पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ये नारा दुनिया भर में ट्विटर पर काफी आगे चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 लाख लोग इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं और नमो ऐप पर 1 करोड़ लोगों ने मैं भी चौकीदार शपथ ली है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा है कि वर्तमान में जेट एयरवेज के 41 विमान परिचालन के लिए उपलब्ध हैं और आने वाले हफ्तों में विमानों में और कमी आ सकती है। डीजीसीए के प्रवक्ता ने कहा कि निदेशालय ने आज परिचालन उड़ान के लिए सक्षम तथा यात्री सुविधाओं को लेकर जेट एयरवेज के कार्य निष्पादन की समीक्षा की। राजधानी में आज दोपहर में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1,81,000 से अधिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत 25 मार्च तक बढ़ा दी है। होली के अवसर पर 21 तारीख को दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। This was All India Radio, the news read by Tanvi Taneja. BJP Central Election Committee is holding meeting in New Delhi to discuss the names of candidates for the ensuing Lok Sabha elections. Prime Minister Narendra Modi, BJP Chief Amit Shah and senior party leaders and union ministers Rajnath Singh, Arun Jaitley and Nitin Gadkari are among those attending the meeting. This is the second meeting of the committee to finalise the list. However, the party is yet to announce any name of the candidate for general elections. Notification for the second phase of Lok Sabha elections was issued today. 97 constituencies spread over 13 states and union territories will go to polls in this phase on the 18th of next month. Elections will be held in all the 39 constituencies of Tamil Nadu. Notification for by-elections in 18 assembly constituencies in the state has also been issued. Other states and union territories where voting will take place in the second phase are
14 seats in Karnataka, 10 in Maharashtra, 8 in Uttar Pradesh, 5 each in Assam, Bihar and Odisha, 3 each in Chhattisgarh and West Bengal, 2 in Jammu and Kashmir, and 1 each in Manipur, Tripura and Puducherry. The last date for filing nominations is 26th of this month. Scrutiny will take place the next day, with 29th being the last date for withdrawal of candidature. The GST Council today approved a transition plan for new goods and services tax rates on residential properties. As per the plan, developers of under-construction buildings may either opt to shift to revised lower rates without input tax credit or stick to previous rates. Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey told media that for housing projects launched on or after the 1st of April this year, developers will have to adhere to new GST rates recommended by the Council last month. Developers can also opt for different GST options for separate buildings in a project, depending if construction started before or after 31st March this year. Mr. Pandey added that there will be no revenue loss to the government due to new GST structure for under-construction housing. The Enforcement Directorate ED has attached 13 properties of Mohammad Shafi Shah and 6 other terrorists of Hizbul Mujahideen in Jammu and Kashmir. The properties, more than 1 crore, were attached in connection with ongoing investigation against Hizbul Mujahideen commander Sayyid Salahuddin and others under the Prevention of Money Laundering Act. During investigation, it was revealed that the terror funds are sent to India illegally through Hawala Channel and human carriers. Election Commission today directed all political parties to desist from indulging in any political propaganda involving activities of the defence forces. The Commission has issued an advisory to presidents of political parties in this regard. The advisory says that the political parties are advised that their campaigners and candidates should desist from such activities. In Karnataka, 11 nominations were today filed by 6 candidates after the notification was issued for the second phase of Lok Sabha elections. Chief Electoral Officer Sanjeev Kumar informed media persons in Bengaluru that the nominations were filed in Dakshin Kannada, Mandya, Mysuru and Bengaluru South constituencies. On the Model Code of Conduct violations, he said more than 1 crore 35 lakh rupees cash was seized besides liquor worth over 20 lakh rupees and other items worth over 1 crore 34 lakh rupees. In Bihar, 7 nomination papers were filed today for the first and second phase of Lok Sabha elections. Altogether, 8 nomination papers have been filed so far. Sitting MP Santosh Kumar of JDU has filed nomination paper from Purnia Lok Sabha seat. Meanwhile, Parliamentary Board meeting of Jitan Ram Majhi-led Hindustani Awam Morcha HAM will be held tomorrow in Patna to decide names of contesting candidates. Newly appointed Goa Chief Minister Pramod Sawant assumed office at the State Secretariat in Port Vorim today. Mr. Sawant told reporters that his government will face a floor test in the Assembly tomorrow and that it is confident of clearing it. Mr. Sawant was sworn in as the Goa Chief Minister late last night. He succeeds Manohar Parrikar, who passed away on Sunday following prolonged illness. Governor Mridula Sinha administered the oath of office and secrecy to the 46-year-old leader who represents Sankhale constituency. Before taking oath, Mr. Sawant had resigned from the post of the Speaker of Goa Legislative Assembly. Congress President Rahul Gandhi has said if his party comes to power, it will reinstate special status and special plan assistance for Arunachal Pradesh. He said Congress government will also bring back the Northeast industrial policy. Mr. Gandhi was speaking after launching the party's campaign for Assembly and Lok Sabha polls in the state. Addressing a public rally in Itanagar, Mr. Gandhi also assured that the party will never allow passing of Citizenship Amendment Bill. Simultaneous Lok Sabha and Assembly elections will be held in Arunachal Pradesh on 11th of April. And in football, 4-time defending champions India will start as overwhelming favourites against Bangladesh in the second semi-final of the 5th SAF Women's Championship in Viratnagar, Nepal tomorrow. And that is the end of this news bulletin. This is All India Radio, the sports news read by Saira Mujtaba. Special Olympics. India win 188 medals so far at the World Games, including 50 gold. Football. Favourites India take on Bangladesh in the semi-final of SAF Women's Championships in Nepal tomorrow. And badminton, Lakshya Sen and Riya Mukherjee break into the top 100 in the latest world rankings. In Abu Dhabi, India won a total of 188 medals at the Special Olympics World Games as of yesterday. These comprise 50 gold, 63 silver and 75 bronze medals. The medal tally surged as Indian paddlers made history in table tennis with 4 gold and 1 silver medal each.
Coach Sheetal Negi said that the Indian contingent underwent 4 preparatory camps in Gurgaon, Jodhpur, Haryana and Mumbai before competing in Abu Dhabi. The men's team has also won 2 gold medals at the Games. In Judo, Sonu Kumar from Rohtak, Haryana won the gold medal by winning all 3 bouts. Muskan bagged a silver each in squat and bench press. She also won a gold in deadlifting. In roller skating, Vijay, Hufaiza Ayub Sheikh, Jashnadeep Singh, Harshad Gaunkar and Hardik Agarwal also brought laurels for the country. 4 silver medals were bagged by Santoshi Vijay Kauthankar from Goa in the female category. India has sent a 378-strong contingent that is participating in the 15th edition of the Games. The closing ceremony of Special Olympics World Games is scheduled for Thursday. In shooting, India's Prithvi Raj Tondaiman shot 2 perfect rounds of 25 to stay on course for the men's trap finals at the ISSF Shotgun World Cup being held at Mexico. Yesterday was the first day of qualifying in the men's trap event. Prithvi Raj was in a group of 7 shooters in a field of 107 who shot a perfect 50 after the first 2 rounds. 3 more rounds of qualifying will take place today before the top 6 make it to the finals. There are 2 Tokyo 2020 quota places up for grabs in this event. However, the women's trap team bowed out of the International Shooting Sport Federation or ISSF event. In cricket, there are 2 short formats so far, that is ODI and T20. Now brace for T10. The Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi will be the new home of T10 cricket for the next 5 years, starting with the 2019 season. Abu Dhabi Cricket, in partnership with Abu Dhabi Sports Council and the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi, has signed a 5-year agreement with the organisers of the T10 Cricket League. The shortest form of the game will now be played exclusively at Zayed Cricket Stadium. The first match of the T10 League 2019 will be held on October 23. In football, 4-time defending champions India will start as overwhelming favourites against Bangladesh in the second semi-final of the 5th SAF Women's Championships in Biratnagar, Nepal tomorrow. The match will be played at 2:45 p.m. Indian coach Memol Roque has exuded confidence about team's preparedness for the match. In the first semi-final, host Nepal will take on Sri Lanka. This match will begin at 10:45 a.m. Since the inception of the tournament in 2010, India have never been on the losing side, clinching all the 4 editions of the event. In the last edition of the tournament in 2016, India had defeated Bangladesh 3-1 to clinch the crown. The final will be played on Friday. Until 1971, the German Football Association or DFB banned women from playing in competitions. Moreover, any clubs allowing women to train or play at their facilities was liable to be sanctioned. Nevertheless, the sexist rules from a bygone era did not stop Wolle Ben, now aged 75, playing football. She kicked a ball for the first time on 5th July 1954 at the age of 10. She'll be cheering the German team at the Women's World Cup kickoff in France this June. And young Indian shuttlers Lakshya Sen and Riya Mukherjee today broke into the top 100 among men's and women's singles players in the latest World Badminton rankings. Making a massive jump of 28 places, Lakshya Sen is placed 76th. Riya Mukherjee climbed up 19 spots to be placed 94th. In the women's singles rankings, PV Sindhu and Saina Nehwal are static, with Sindhu at 6th and Saina at 9th position. Among men, B. Sai Praneeth also moved up 3 places to 19th. Kidambi Srikanth remains static and is the best placed Indian in the men's ranking at 7th. And that is the end of the sports news.